cavity lifetime. It is basically denoted by T subscript C. Okay. So suppose you have pair of mirrors. Okay. M1. So reflectivity is R1. M2. So reflectivity is R2. And these two mirrors are separated by a distance of small d. And this, let us also assume the initial energy stored inside the cavity is W of 0. Further, let us assume the refractive index inside this medium is small n. Okay. Now please write the definition of cavity lifetime. Then we will derive that expression for cavity lifetime. So please. W is what, sir? W0, the energy initial energy stored inside the cavity. Okay. So please write that definition first, then we'll derive it. So it is a time. It is a time in which stored energy inside the cavity decrease by a factor of 1 by E. Decrease by a factor of 1 by E. Okay. So now we'll derive it. So if W0 or W0 is the energy, initial energy stored, so after time t, the energy left inside the cavity is W0 initial energy into exponential T by Tc. Okay. If you plot it, how that energy will be decreased. So I'm taking along x-axis your time, and this side your energy left after time t. Okay, and obviously this will be the origin. So initially it is W0, right here when time is 0. Then it will start exponentially decreasing, right? And at t equals to Tc, this energy will be how much? Stored energy. Obviously, it will be W0 by E, right? Okay. So this factor is basically energy left inside cavity after time t. Okay. Now I'll ask one question. Please give me that answer. सर Yes. 0 के t के बीच में अपने क्या लिखा है, मतलब tc है क्या या t half है? T by Tc. This नहीं is वहाँ नहीं सर, ग्राफ में. yes. At time t equals to Tc, when time t equals to Tc, at this time your energy stored or energy left inside the cavity will be how much? This much. Is it clear now? When is it clear from here? You just substitute here. If you substitute t equals to Tc here, Tc will be gone. So obviously you will get W0 by E, right? Okay, sir. Clear. Thank you, sir. Sir, ये small n क्या है? Small n is the refractive index of this medium. Suppose you have some medium here. So if the medium has refractive index n, that this is the n.
inside medium, inside cavity you have suppose active medium, and light is propagating through this, and I am taking that refractive index of that active medium is 10. Is it clear now? Yes. Yes, sir. Okay. Now I'll ask one important question. Sometimes from in GATE they used to ask this type of question. It's a very basic question I'll ask. Suppose you are shining some photon here on this material. So incident photon has intensity I naught, and let us assume the thickness of this medium or length of this medium is x. So after passing through this intensity or in these photons, how much will be the output? How much will be the output? So basic law of absorption coefficient. So how much will be? So here the output, let us assume it I. So obviously it will be how much? I know Exponential. mu by x. This is exponential minus alpha x, right? Please note this. This is very basic. So when obviously there will be absorption, diffraction, many things will happen inside that material, and you know that light matter interaction. So when that light initial intensity I naught passes through this medium having length x, so output will get I equals to I naught exponential minus alpha x, where x is the distance travel. Alpha, what is alpha here? What is alpha here? Anyone? Good. Absorption coefficient. Exactly. So it will be absorption coefficient. Okay. Now, can we write this? Can you take help of this equation here to calculate the energy left after one round trip? One round trip means what? Suppose your photon is here, so it is going this distance d, and it is reflected by this R2, and again it will come back. So total distance is traveling how much? 2d, right? So after completing on cycle, this is known as round trip. One round trip. One round trip means photon will start from this mirror, it will go here, d distance, again it will come back. Okay. So energy left after one round trip will be how much? We'll take help of this equation. So how much distance it is actually traveling? 2d, right? Okay. So we can shall I erase? मैं ज़्यादा bent नहीं हो सकता हूँ. Shall I erase? Yes. Okay. So we can write that energy left after on round trip. On round trip, okay. So that will be, let us assume, W of t. Okay. So obviously we will get this factor, and of course this will be exponential minus 2 alpha d. Right? Is it clear, this factor? This is your initial energy. So after time t, the energy left will be this. And of course, this factor also will come, that reflectivity R1 and R2. So if that reflectivity or two mirrors are fully reflecting, obviously this factor will be on. Is it clear? सर हाँ. सर जब वो सेकंड मिरर से आएगा वापस सर, तो सर उसमें मतलब एनर्जी कैसे स्टोर होगा, मतलब हाउ एनर्जी इज बीइंग लेफ्ट? एनर्जी लेफ्ट नहीं होगा, आपका फोटॉन्स तो एनर्जी है ना. यस सर. तो सपोज मान लीजिए आपका ये मिरर से, तो यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से वापसी आएगा, तो एनर्जी तो स्टोर ही हो रहा है ना. आप हाँ, लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि मीडियम का एब्जॉर्प्शन है, आपका डिफ्रैक्शन है, मेनी फिनोमेना आर देयर.
This is a concept of light matter interaction. That's why this energy will be decreased. Okay, and this factor will also come R1 and R2 because there will be if that reflectivity is they are fully reflectivity, this factor will be on, but there will be some partial reflectivity here, right? So there will be some emission of light also. That will also decrease that energy. Okay, sir. Now is it clear? So now left means, yes, sir. Left means left means decreasing here the energy. So inside that cavity, energy will be decreased. So if initial energy is W naught, so after time period. progressing, that energy will be decreased due to absorption, diffraction, many phenomena are there. And Okay, also sir. this mirror is partially reflecting, although they are highly, this is fully reflecting, this is also highly reflecting, but there is some, there will be some emission of laser light, right? So that will also decrease that energy stored inside that cavity. Okay, sir. Now can we write, so initial equation that what we have written, that is valid for any time. So can we write this initial equation, if you remember W of t, that was W naught exponential t by tc. So for on round trip, can we write this equation? Anyone, can you help me? So let us, you will give that first equation is 2, sorry, equation number 1, and let us give equation number 2. So please mention that first equation is your, sorry, previous equation is first equation, this is your second equation. Now can we write that equation on for one round trip, because it is valid for any time, arbitrary time. So there was t, right? So time taken by this, there is a factor, right? Exponential minus t by tc, no? So this time taken for one round trip will be how much? Time taken by this photon to travel or to D by complete C. R1 or R2 into e raised to 2 d by v, right? Because I have taken refractive index n, right? So further you can write 2 d by c by n. So it means 2 d n by c. Is it clear? So it is refractive index भी है इसमें n. हाँ, क्योंकि मैंने अज्यूम किया गया था कि इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, n है. तो यहाँ पे जो स्पीड होगा फोटोन का इज नो लॉन्गर c, दैट विल बी v and v will be c by n. Okay, sir. Now can you write this equation for on round trip? So this is for also on round trip, this is also for on round trip. सर कंपेयर करके लिखना है क्या हमें? हाँ, पहला इक्वेशन जो है उसको ऑन राउंड ट्रिप के लिए देखूंगा, और ये आपका ऑन राउंड ट्रिप, दोनों को कंपेयर करके टीसी आ जाएगा. कैन यू राइट? प्लीज टेल मी. Obviously W naught will be there, then it will be how much? E power minus 2dn by CTC. 2dn by CTC. CTC. Very good. Now we'll compare for these two equations. Let us take, this is your equation number 3. Okay. So I'll take that right hand side and this. Okay. Both right hand side. So we can write like W naught R1 R2 exponential minus 2 alpha d should be equals to W naught, then you have what? R1 R2, no, W naught exponential minus 2dn by c into tc. Okay. Obviously this W naught will be gone, right? Now we'll take a natural log. So if you take natural log, you'll get natural log of, so आप लोग लिख लो, मैं ऊपर लिखूंगा. आप लोगों का हो गया? Yes, sir. Shall I erase? Yes. Okay. सर इसमें वन राउंड ट्रिप और टू राउंड ट्रिप के लिए सेम ही एनर्जी डिसिपेट होगी, मतलब जो हम एनर्जी लेफ्ट कर रहे हैं उसमें दोनों ऑन राउंड ट्रिप के लिए है ना. जितना ज्यादा नंबर ऑफ राउंड ट्रिप ज्यादा होगा उतना एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा. ठीक ठीक ओके. दोनों ऑन राउंड ट्रिप के लिए है. अब
क्या आएगा आपका? नेचुरल लॉग ऑफ R1 R2 and what will be the second term? Plus 2 alpha. 2 alpha D, right? No. Then on the right hand side you will have minus 2D n by C TC. Is it okay? Yes, sir. Okay. From where can I write TC equals to 2dn by C into natural log of 1 by 1 minus x, where x is 1 minus R1 R2 exponential minus 2 alpha d. देखो ये आपको आप लोगों का आ रहा है कि नहीं? किसी का कोई डाउट है तो बताओ इसमें. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैविटी लाइफ टाइम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जाम. किसी का कोई डाउट है इस इक्वेशन में? इफ नो देन वी कैन प्रोसीड. प्लीज रिस्पॉन्ड. हाँ, आपका किसी इसमें डाउट है इस इक्वेशन में? Yes, sir. Please explain once. हाँ, ओके. सो यू सी नाउ देखो मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है? तो इसका अगर टीसी लिखोगे तो कितना आएगा? 2ND डिवाइड बाई C इंटू 2 अल्फा D minus natural log of R1 R2, and this factor you can write 1 minus this factor you can write ln 1 by 1 minus x, where x is how much? 1 minus R1 R2 exponential minus 2 alpha d. That I'll prove. Okay. So this term को आप इस वे में लिख सकते हो. Let us proceed. ये जो है ये बराबर हो जाएगा. तो इसको अगर करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं ln 1 minus ln 1 minus x, right? What will be the value of ln 1? 0. Exactly. So it will be 0 minus ln. Yes, sir. You substitute it here. Now 1 minus 1 will be 0. You will get R1 R2 exponential minus 2 alpha d. Now इसको ब्रेक करो, एग्जैक्टली यही आ जाएगा. Shall I do? अब कोई स्टेप करने का जरूरत है इसके बाद? आप लोग कर सकते हो, राइट? इसको नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू बी इसको. हाँ Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है ना? ओके, चलो ठीक है. नाउ विल डू we'll proceed for Ruby ledger. Shall I erase? Yes, sir. Okay. कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? सही चल रहा है सर. सही चल रहा है? बहुत अच्छा रिजल्ट होना चाहिए. अच्छा रिजल्ट करके अच्छे जगह पे एडमिशन लो, रिसर्च करो अच्छे से, कि देश का नाम रोशन करो. ठीक है. Now we'll discuss about that Ruby ledger. Of course, this thing will be vanished.
laser. Okay. So ruby laser is consist of a ruby rod, that is basically ruby rod is nothing but aluminum oxide. So this is basically ruby. This material is known as ruby, and there is a doping of chromium 3+ ion. And actually, chromium 3+ ion act as a active medium. Okay. So this laser is basically solid state laser. Okay. Is it clear? And here pumping is done by flash lamp. Or you can say optical pumping. Okay. Now we see, I'll draw here construction here. So I have to remove this part. एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। Yes. Okay. So what is solid state laser? Solid state means that material is solid. Okay, sir. That is rod, you know. Okay. Now suppose I'll draw that construction. You have mirror and you have M1 and M2. You have ruby rod and this is basically Al2O3 plus chromium 3+ ion, and this is your flash lamp. Okay. So if you see that energy level diagram of chromium 3+, because chromium 3+ basically work as a active medium. Okay. So this is the, it will have, this is your ground state E0. This is your first excited state, and this is your second excited state. So this is your energy level of chromium 3+. Okay. And there will be a state, this is known as metastable state. And everything is basically happening inside your medium. Sorry, inside your mirror. Okay. This is your M1 and this is your M2. Now, the wavelength corresponding to this energy separation is 6,600 angstrom. And energy separation corresponding to this, or wavelength corresponding to this energy separation is 4,000 angstrom. Okay. ठीक है. So, okay. So this is the energy separation.
नाउ सपोज मान लो आपको जो एटम से उसको यहाँ से यहाँ पंप करना है, ठीक है, either you can pump here or you can pump here. So for the time being, let us take, I'm pumping that atoms of chromium 3 plus ions from here to here. So how much energy is needed? The energy corresponding to this wavelength, right? So I have to assign that photon which will have the wavelength of 6600 angstrom. Is it clear? ठीक है? सर हाँ एनर्जी लेवल ऑफ ये सिर्फ CR3 प्लस का हाँ, लेवल actually ड्रॉ करे CR3 plus is, ASO3 हाँ, actually that's what I'm saying. CR3 plus is actually working as a active medium. Okay. okay. CR3 is basically working as a active medium. So whatever laser is producing, that is due to of chromium 3 plus. So I will sign this Sir. photon. हाँ सर ये मतलब फ्लैश लैम्प जलाने से फोटॉन्स इस मटेरियल पे गिर रहा है। हाँ, ये फोटोन आपका मटेरियल से गिर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका एटम्स है इनिशियली तो ग्राउंड स्टेट पे एक्साइटेशन हो होगा। रहा है, हाँ, तो ऑब्वियसली एक्साइट हो रहा है। हाँ, when you will sign this photon, okay, so that atoms will excite here. And sir, what is M? Huh? M is What also is on M? state, that is metastable state. That is Oh, actually okay, playing that role to produce laser light. So जब आप फोटोन को साइन करोगे क्या होगा, यहाँ पे पंप हो जाएगा, but this is excited yes state. sir. Now forget about this because I am using only this excited state. Okay, तो यहाँ पे जैसे आपका ये हो जाएगा, इस एक्साइटेड स्टेट में जो एटम का लाइफ टाइम है वो बहुत स्मॉल है, 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका लाइफ टाइम है इसमें 10⁻³ सेकेंड के ऑर्डर में होता है। तो यहाँ से जब पंप हो रहा है तो फिर दो पॉसिबिलिटी, आइदर यहाँ से फिर यहाँ जंप कर जाएगा और यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, नहीं, नो, इज इट क्लियर? क्योंकि ये लाइफ टाइम बहुत स्मॉल है, विद इन वेरी स्मॉल टाइम दैट एटम्स विल इमीडिएटली डिके or it will come to here or it can come to there. Is it clear what I'm saying? Is it clear? Yes. Now suppose आपके पास 1000 एटम है, ठीक है, आपने 400 को सेंड किया यहाँ पे, ठीक है, तो 400 में से 200 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 200 इधर आ जाएगा। आई एम टेकिंग रफ एग्जांपल। और यहाँ पे जो एटम आ जाएगा वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा, यहीं पे रह जाएगा। तो यहाँ पे एक अब यहाँ पे कितना एटम हो जाएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 200 है, नहीं, फर्दर आपने पंप किए हो 400 को, तो 400 में से वापसी आ जाएगा 200, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, यहाँ पे तो रह जाएगा वो क्योंकि लॉन्ग टाइम है उसका। फिर आपने फर्दर सेंड किए हो 300 को ना, तो पहले कितना था, 800 में से 400 सेंड किया तो 400 लेफ्ट है, 400 और 200 फिर वापसी आ गया, 600 हो गया, यहाँ पे 400 है, आपने फर्दर 300 को सेंड किया, यहाँ पे पंप किया, 300 में से 150 आ गया यहाँ पे, है ना, वहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सर 550। हाँ, रिपीट करने के लिए बोल लो। नहीं सर नहीं, वो बता रहे 550 हो जाएंगे। हाँ, 550 हो जाएंगे यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, addition of all the number all the 550 तो 1000 ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स, 450। तो देखो इस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, तो यू कैन वी से दैट पॉपुलेशन कैन बी अचीव बिटवीन दिस टू लेवल, नो? यस पॉपुलेशन इन्वर्जन। inversion क्या हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको बोलते हैं, अगर हायर स्टेट का नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट इज आपको, ये आपको रिक्वायरमेंट है लेजर लाइट के लिए, नहीं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन नीचे इन्वर्जन अचीव हो रहा है, तो फिर क्या होगा, इमीडिएटली आपका एक स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू एक फोटोन इमिट होगा, ये फिर यहाँ पे इस मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके स्टिमुलेटेड इमिशन होके 2 फोटोन देगा, फिर यहाँ आके फर्दर स्टिमुलेटेड इमिशन होके 4 देगा, सो विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम यू विल गेट लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स, ओके, एंड ऑफ कोर्स द wavelength corresponding to this is 69
4, 3, and 4. Is it clear what I'm saying? Did you understood how that the true laser work? Is it clear now? Yes, sir. Yes. Okay. सर Can you ये please repeat once? हम बाहर से क्रिएट कर रहे हैं यो उसमें है जी ये सर मेटास्टेबल स्टेट ये हाँ सर एक्टिव मीडियम पर ऑलरेडी है या बाहर से हम क्रिएट कर रहे हैं? ऑलरेडी है। सर मेटा स्टेबल मतलब थोड़े टाइम के लिए स्टेबल ऐसा कुछ है क्या? मेटास्टेबल मतलब जहाँ पे एटम्स का लाइफ टाइम ज्यादा है। मेटास्टेबल यू कैन फ्रॉम द टर्म यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, राइट? स्टेबल मतलब कंप्लीटली स्टेबल है, मेटा मतलब ज्यादा स्टेबल बट फुल्ली स्टेबल नहीं है, ठीक है? और यू कैन से दैट एटम विल स्टे लॉन्ग टाइम हियर। So we can say in comparison to E1, it is more stable. Of course, lifetime you can see na 10 to the power minus 3. If atom will stay here for 1 second, here it will stay 10 to the power 6 second. You can understood now. 10 to the power 6 or 10 to the power 5. If atom can stay here for 1 second, atom can stay here for 10 to the power 5 second. You can understood how much big it is. Is it clear now? सर तो मतलब हीलियम मतलब रूबी लेजर जो होता है उसमें हमें मेटास्टेबल स्टेट पे देखना होता है। For every laser you have to have metastable state. अदरवाइज आपका हायर स्टेट में कैसे ना N2 को ज्यादा करोगे, है ना? तो N2 को ज्यादा करने के लिए ऐसा एक स्टेट होना पड़ेगा जहाँ पे एटॉम्स लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करे, है ना? उसी अगर नहीं करेगा तो फिर आपका N2 ग्रेटर देन N1 का भी नहीं हो पॉसिबल है। तो हर स्टेट में आपका ये होना ही पड़ेगा मेटास्टेबल स्टेट। मतलब सर वो बाय डिफॉल्ट ही होता है ये? बाय डिफॉल्ट नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर होता है मटेरियल का, हर मटेरियल से आप नहीं बना सकते हो, ठीक है? Is it clear now? Now we'll if you are okay, then we'll derive one important parameter that will be important for your NET exam. Shall I erase? Shall I erase? सर एक मिनट। हाँ ओके सर। Did you get that how it is working? Doubt हो तो अभी पूछ लिया करो क्योंकि आगे आपका काम में आने वाले हैं। And this is really interesting, you know, this part. Completely physics is there. Okay. Now same thing I'll drive. Again I'll draw that same diagram, but this is the part of same ruby laser. Minimum power required for population inversion. Okay. So suppose you have same level chromium 3 plus. So this is your E0, E1 and M. Let us assume the lifetime of this excited state is tau sp. Okay. And you're pumping here, that number of atom is N2, here N1. Okay. Here N1, N2, and total atom is, total number of chromium atom is N0, that is N1 plus N2. Okay. So you are pumping these atoms from ground state to here, and let us assume that frequency corresponding to this light or pumping frequency is nu p. Okay, now we'll define few parameter tau sp.
व्हाट इज टाउ? पंपिंग मतलब हाँ, जो pumping अपने means लाइट we are यूज कर रहे थे ना, exciting. हाँ, जो फ्लैश लैम्प का लाइट यूज कर रहे थे ना, वो एच न्यू पी, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं न्यू पी लिखा हूँ, ठीक। Okay sir. ओके, नाउ टाउ एस पी क्या है लिखो। टाउ एस पी इज द स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम ऑफ लेवल इवन, spontaneous lifetime of level E1। फिर लिखो न्यू पी। न्यू पी क्या है? पंपिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आपका एक एनॉन बाई टाउ एस पी। एनॉन बाई टाउ एस पी इज number of atoms decaying per unit time from the upper level or from level E1. Number of atoms decaying per unit time from level E1. Have you written? Yes, sir. Okay. Now power is what? Power P is what? Rate of Energy per unit time, right? So power P, can we write H nu P by tau S P? Tau S P. yes sir. तो ये एक्चुअली बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एच न्यू पी बाई टी। एच न्यू पी की इसका एक फोटोन का एनर्जी, राइट। एच न्यू पी मतलब क्या है? एक फोटोन का एनर्जी है। हाँ, सो एनर्जी दिस मच पावर यू नीड टू पंप और टू पुश ऑन एटम फ्रॉम E0 टू E1, E0 टू E1। तो फिर आपका N2 नंबर ऑफ एटम्स को पुश करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? N2 into N2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। Exactly. So for you can write. Sir. Yes. सर ये वाला पॉइंट सर आपने क्या बोला था? कैन यू जस्ट रिपीट? हाँ, यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक एटम को इवन में पंप करने के लिए दिस मच पावर यू नीड, एंड दिस पावर इज फ्रीक्वेंट बिकॉज व्हाटएवर suppose you are giving a shining photon, so it will come here, immediately it will decay, right? Because there is Yes, so frequently you have to give this much of power to maintain, always there will be one number of atoms here. So frequently you have to supply this much of power so that atoms will remain, there will be one atoms here, and that atom immediately go to here. Okay sir. Now N2 के लिए कितना चाहिए आपको? To push N2 atoms in E2, sorry, E2 E1, right? So how much will be that power? Will be N2 into H nu P by tau SP. सर हाँ, yes. यहाँ मतलब E2 में N2 ही एटम है ना, मतलब हाँ, notation N2 में इनिशियली तो नहीं था ना। N2 को मैंने पंप किया हूँ, तो उसके लिए अब मेरे को इतना एनर्जी चाहिए, एनर्जी पावर चाहिए। इनिशियली देयर विल बी नो atoms there, right? So Yes. every system want to stay in stable position, so initially almost all atoms will be here, so you have to pump this atom. So after pumping, I am assume this number of atoms. Initially almost all atoms will be here. Okay. So you are pumping this number of atoms. So here you will get N2 number of atoms, and this N2 number of atoms immediately will come to here. So now the situation is like that. N2 number of atoms. टोटल N2 नंबर ऑफ तो नहीं आएगा ना? आधा नीचे जाएगा, नहीं, आधा ऊपर। आधा नीचे आएगा, उसीलिए तो आप कंटिन्यूअसली पंप कर रहे हो ना।
आधा नीचे Oh, आएगा ना, तो इसलिए आपको फ्रीक्वेंटली पंप फिर करना जाएगा। पड़ेगा. So you need always they will maintain n2 number of atoms and this n2 number will immediately come here. Okay sir. Now पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए मिनिमम कितना होना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है आपके पास? n नॉट. ओके, सो एटलीस्ट टोटल नंबर जो एटम्स है उसका आधा होना ही पड़ेगा n2 को, एटलीस्ट. तभी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा बिटवीन m on middle state m and e naught. So minimum power required is how much? P minimum will be, in place of n it should n2 it should be n naught by 2 h nu p by tau is. Is it clear? सर आधा क्यों मतलब? तो यहाँ पे आपका आधा होने के बाद यहाँ पे कितना रह जाएगा एटम? n नॉट बाई 2. यहाँ पे कितना होना पड़ेगा? आधा. n नॉट. तो n नॉट बाई 2 इतना पावर चाहिए, इससे ज्यादा मिनिमम इतना चाहिए. इससे थोड़ा ज्यादा दोगे तो फिर कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ का एटम यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा दोनों के बीच में. तो मिनिमम आपको इतना पावर चाहिए ही चाहिए. नाउ इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? And this is very important for your net purpose. So you have to know every parameter. This is your pumping frequency, lifetime of this state, not this state. Student always mistake this thing. Tau sp is not the lifetime of this state. This is the lifetime of this state. And nu p you know. And n naught is the total number of atoms. You can say. Now is it clear? Is it clear now? Okay, so I'll take a little break, then we'll go to helium neon laser and then radiation. Okay. Okay sir. Okay. Okay, sir.